Hi guys, a very good morning to all of you. Good morning, Raja Singh, Apurv, Prashant, Prasanjeet. A very good morning to all of you. I hope I'm audible and visible to you all. एक बार फिर भी कंफर्म कर दीजिए क्या सभी को मेरी आवाज आ रही है? So we will start today's session. So let's start today's article. Quickly हम लोग start करते हैं without much ado. We will quickly start today's article. Thank you, Apurv, for confirming. Okay. Okay, thank you. So if I talk about yesterday's homework, कल के homework की अगर बात करूँ तो मैंने did the homework. टीना, अपूर्व, संजीव, प्रसन्नजीत, दयानिधि, सौरभ, मोहंता, एसटी, अर्जू, relax, संदीप. So there were many who did the homework. Okay, Sabri, all these people did the homework. तो काफी लोगों ने homework किया था. Now we will start today's session with a quote, and the quote is, "Who is MS Dhoni here?" Good morning, MS Dhoni. Happiness is not something ready-made, it comes from your own actions. Okay, देखिए, if you want to be happy, तो आपके खुद के एक्शन से. देखिए, हैप्पीनेस के लिए कोई बहुत बड़ी चीजों की जरूरत नहीं होती. छोटे छोटे स्मॉल थिंग, अगर आप किसी की हेल्प कर देंगे, उसके अंदर जो आपके अंदर उस चीज में जो आपको हैप्पीनेस, जो प्लेजर मिलता है, दैट इज लाइक, इट कैन नॉट बी मेजर्ड. वो चीजें मेजर नहीं हो सकती हैं. सो हैप्पीनेस इज नॉट समथिंग रेडीमेड. ये आपको कहीं मार्केट में हैप्पीनेस नहीं मिलेगा, बनी बनाई नहीं है. ये आपके खुद के एक्शन से आपको अंदर हैप्पीनेस डेवलप होती है. एंड बीइंग हैप्पी इज द toughest task in these lives. मतलब इतना ज्यादा जो कंपटीशन है, कट थ्रोट कंपटीशन, एस्पिरेशंस इतनी ज्यादा है कि नो वन इज सेटिस्फाइड, नो वन इज कंटेंटेड. ओके, अगर आप देखेंगे तो इसलिए अगर आपका कॉन्सेंस बहुत ही ज्यादा क्लियर है, एज पर मी, अगर आपका कॉन्सेंस बहुत ज्यादा क्लियर है, अगर आपने किसी को हर्ट नहीं किया है, एंड यू डोंट हैव दैट इंटेंशन ऑफ हर्टिंग एनीवन और समथिंग लाइक दैट, ओके, सो ऑफ कोर्स यू विल फील दैट हैप्पीनेस. And if you are happy, whatever you do, you will do that with full zeal, full enthusiasm. Okay. So try to take small efforts, try to keep your parents happy, try to keep your relatives, friends, जो भी आपके आसपास है, have positivity in everything and try to spread happiness uh, with everyone around you. Okay. तो हर किसी के साथ अपने happiness share करिए. So we will start today's session. अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग टुडे सेशन गाइस, प्लीज सब्सक्राइब टू अवर वाईटी चैनल. जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बार फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. लाइक दिस सेशन, शेयर दिस सेशन विद मैक्सिमम. ओके, गुड मॉर्निंग नीरज, नीतीश, हरप्रीत, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. No, I'm perfectly fine, Apurva. I'm perfectly fine. Might be intensity is a bit low, but I'm perfectly fine. Okay. सो सब्सक्राइब टू अवर वाईटी चैनल. जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. लाइक दिस सेशन, शेयर दिस सेशन विद अदर्स. इज प्लस वी1. So where did you get is plus v1, Naveen? कहाँ आपको is plus v1 दिखा? is plus v1 is never ever possible, never. और सेशन को एक बार आई होप सबने लाइक कर दिया होगा. जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, तो प्लीज लाइक दिस सेशन. जो कभी भी देखेंगे, एक बार सेशन को जरूर लाइक कर दीजिएगा. एंड शेयर दिस सेशन विद ऑल द ग्रुप्स, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, जितने भी आपके पास ग्रुप हैं, एक बार फटाफट से सेशन शेयर कर दीजिए. ओके. एंड दोस्त हु हैव नॉट डाउनलोडेड अवर ऑलीबोर्ड ऐप, तो एक बार ऐप भी आप क्विकली डाउनलोड कर लीजिए. आपको कुछ नहीं करना है. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इज गिवन. क्लिकिंग ऑन दैट लिंक, यू कैन डाउनलोड अवर ऑलीबोर्ड ऐप. ओके. नवीन, आई एम आस्किंग वेयर डिड यू गेट इज प्लस वी1? आप मुझे बताइए तो आई कैन क्लैरिफाई दैट डाउट, बिकॉज इज कैन नेवर बी फॉलोड बाय वी1. गुड मॉर्निंग एवरीवन. सो वी विल क्विकली कम टू ग्लिम्स ऑफ टुडेज सेशन. फटाफट से हम लोग आज की ग्लिम्स पे आएंगे. सो वी विल स्टार्ट विद द रिवीजन सेशन. कल हमने जो भी वोकैब्स, इडियम्स एंड ready-made is an adjective. Ready-made is not verb. Ready-made is an adjective. Okay. We say a ready-made garment, ready-made clothes. So it is an adjective. It is not a verb. So either they can be either followed by ing form, V3 form, or they are followed by adjective form. So we will have revision session. Revision session means whatever vocabs we saw yesterday, idioms and phrases, everything we are going to revise today. वो सारी की सारी चीजें आज हम लोग revise करेंगे. Then we have vocabs of today's session. Important vocabs हैं, अच्छे vocabs हैं. Idioms and phrases also you will get complete article with everything. Phrasal verbs also we have many in today's session. आज के session में आपको काफी सारे phrasal verbs भी दिखेंगे. So all these things we have in today's sessions. Okay. Complete analysis of today's article. Article itself is important. अच्छी article है. Grammar learning. अच्छा, कल कुछ चीजें मुझे डाउट ग्रुप में दिखा था, जो आप लोगों को कंफ्यूजन था.
So there are a few important points that I would discuss today. Okay, कुछ important rules थे जो मैं आज discuss करूंगी जहां पर confusion हो सकते हैं आपको. Okay, so this section is also going to be extremely important today. Then we have tone and objective as usual and practice exercise, that is homework. So this I know you have your examination, मतलब बहुत ही ज्यादा important examination आपका lineup है. Okay, IBPS PO जिसके लिए आप पूरा साल wait करते हैं. But still I will say कि अगर आपको लगता है कि you can spare few moments for this homework, no, it is not compulsory. ठीक है, पहले बहुत सारे लोग करते थे. But still अगर आपको लगता है कि for sentence formation just to improve your writing और अपनी grammar usage आप यहाँ पे apply करना चाहते हैं, so you can take out 5 minutes. क्योंकि आज के डेट में मैं ज्यादा होमवर्क नहीं दे रही हूँ. I will just give you 2 to 3 phrases for homework so that you can maintain that regularity. Okay. So if you can take out time for this homework exercise, then please do it. Otherwise, अगर आपको लगता है कि no, you need to concentrate on other subjects, you need to concentrate on like mock test and other thing, then definitely you can go for that. आप definitely उसके साथ जा सकते हैं. Okay. So this nowadays till your examination, it is not compulsory. गुड राजा सिंह, आज करेंगे आप होमवर्क. वेरी गुड. अच्छा, सॉरी. नाउ क्विकली वी विल कम टू रिवीजन सेशन. आज के रिवीजन सेशन पे आएंगे. आई होप यस यस दैट इज व्हाई होमवर्क ऑफ कोर्स इट इज इम्पोर्टेंट, बट स्टिल जैसे आपको मॉक टेस्ट दे रहे हैं या कुछ भी, इफ यू कैन नॉट स्पेयर टाइम, सो इट इज लाइक ऑप्शनल. इट इज अप टू यू. अगर आपको लगता है कि यू कैन स्पेयर 5-10 मिनट, देन डेफिनेटली डू, बिकॉज 5 मिनट्स बहुत ज्यादा है. Yes, it is of course going to improve you. Yes, of course it is going to improve you all. Acha, now please be ready for the revision session. I hope you all are ready for the revision session. Okay. सारे लोग vocabs को quickly match करेंगे with their corresponding meanings and synonyms and antonyms. Okay. Shall I start? Everyone, I hope ready. Okay. Quickly, guys. Good morning, Abhishek. Good morning. Match these words with their corresponding meanings. Good morning, Alok. As usual, you have 35 seconds. Alok, why do you write ma'am? It is ma'am now. The exact way of writing ma'am is this. In shortcut, you guys write MAM, but the exact way actually MAM is not a word. Madam is the word. उसका contracted form आपका ये होता है ma'am. Rasanjeet, very good. Amazing, amazing, impressive, right? At least we have one competitor. Good, Rocky. Very good. Good morning, Jyotsna. Alok. Good morning, everyone. Yes, now you are correct, Alok. Madam sounds a bit desi. Ma'am, you should say ma'am only, but I'm talking that it is the right way of writing ma'am. वैसे ये चीज आपको डिस्क्रिप्टिव में हेल्प करेगी. जैसे अगर आपने डियर मैम लिख दिया लेटर वगैरह में, सो इट इज नॉट द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग मैम. इट इज नॉट द, यू मे प्रोनाउंस मैम, इट इज द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ मैडम ओनली. सो बट इट शुड बी रिटन इन दिस वे. ओके. सो आई गेस मोस्ट ऑफ यू आर करेक्ट. आप मैम ही बोलिए. आई एम नॉट आस्किंग यू टू से मैडम. ओके, ऑफ कोर्स मैडम इज लाइक थोड़ा सा यू कैन से आउटडेटेड हो चुका है, नॉट इन ट्रेंडी, डजंट साउंड ट्रेंडी, बट यस द राइट आई एम टॉकिंग अबाउट दैट यू शुड राइट इट इन दिस वे मैम. राइटिंग दिस इज द एग्जैक्ट वे ऑफ राइटिंग मैम. यहाँ तो आप कुछ भी लिख देंगे, मैं आपकी फीलिंग समझ जाऊंगी. ओके, बट interview I'm saying that letter writing, you should take care of this thing. Dear ma'am. Okay. 461. Yes. See, atrocity, as you know, atrocity basically we call to extremely wicked act. This you can say cruelty, abominable, all these can be the synonyms of atrocity. So A will be matched with fourth. Disband basically we call to break up, disintegrate, all these things. किसी भी चीज को dissolve कर देना, खत्म कर देना. So that is called disband. B will be matched with sixth. Outgo is basically expenditure. ये पहले का वर्ड हमने कल भी देखा था. Outgo basically we call to expenditure.
Okay, so C will be C will match with first. ऑप्शंस किसके ऑप्शंस चाहिए आपको अनुग्रह? ऑथोरिटेरियनिज्म दिस वी कॉल टू डेस्पोटिज्म, डेस्पोटिज्म आप कह सकते हैं, टोटलिटेरियनिज्म, tyranny, all these things. So tyranny, all these things we call to authoritarianism, जिसको dictatorship भी कह सकते हैं. So the simple word for this is dictatorship. Okay, dictatorship में cruelty आ ही जाती है. Dictatorship. So D will be matched with seventh. Redoubtable, redoubtable basically we call to impressive, formidable, all these things. Okay, formidable, इसको डाउट से प्लीज कंसीडर नहीं करिएगा, बिकॉज कल भी मैंने कुछ कुछ जगह देखा था, इवन एडिटोरियल सेशंस में मैंने देखा था कि दे टुक दिस रीडाउटेबल एज डाउट ओनली. इट इज इम्प्रेसिव, फॉर्मिडेबल, समथिंग वो जो ऑव इंस्पायरिंग होता है, जो आपके अपोनेंट को एक आपसे डर लगने लगे, बिकॉज यू आर दैट गुड कॉम्पिटिटर, आप इतने ज्यादा अच्छे कॉम्पिटिटर है, सो दैट कैन बी कॉल्ड रीडाउटेबल. ओके, rule basically we call to order, it is a verb here, it can be a noun also. Okay, so F will be matched with fifth, redoubtable will be matched with two, and then perpetrators basically we call to criminal, one who has committed the crime, so G will be matched with three. 4617253, this is the correct. 4617253, yes. Yes, atrocious, atrocity, yes. Atrocious is an adjective, atrocity is a noun. That is the correct way of remembering vocabs, Abhishek. That is correct. Now let's start. Revision of phrases and phrasal verbs. Phrases and phrasal verbs. Good Apurv, good Prasanjit, good Neeraj. See, rise to prominence, this basically we call to the state of being important, the state of being noticeable. So all these things can be rise to prominence. मतलब आप इतने famous हो जाइए कि लोग आपको notice करने लगे. Okay, I wish you all to rise to prominence. Okay. Shear off basically we call to cut off. Basically ये जो wool वगैरह होता है, मतलब hair shear off, all this, in that case we use the word shear off. So B will be matched with fifth, rise to prominence will be matched with bring down. Bring down basically we call to oust. Oust मतलब remove, dethrow someone. Okay, किसी को उसके पोस्ट से हटा देना, so that is you can say bring down. Oust का मतलब क्या होता है? To remove from a job, to remove from a post. Okay, so that is the meaning of the word bring down. So C will be matched with fourth. Breakout, start suddenly. So yes, D will be matched with first, and it basically we use this for unwanted things. कि जो चीजें पसंद नहीं है आपको, वो बहुत ज्यादा फैल जाए. Dethrone, yes, you can say Abhishek. So oust, remove from a post, dethrone, so many words we have. Okay, so all these can be used. And run in, it is basically for conflict, for quarrel. All these we use this word run in. Argument, conflict, quarrel. So E will be matched with third. So one more thing. So run and walk, it is a phrase, it is used as a noun, guys. ये यहाँ पर ये रन को आप किसी भी अलग वे में यूज नहीं कर सकते हैं. ओके, सो इट इज बेसिकली अ फ्रेज, इट विल रिमेन एज इट इज. सो रन इन बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट, क्वारल, इसके केस में यूज किया जाता है एज अ नाउन, दिस वी यूज. ओके, यस, करेक्ट अपूर्व. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. नॉट ब्रेकआउट इज नॉट फॉर कॉन्फ्लिक्ट. ओ सॉरी, क्या मैंने नहीं, ब्रेकआउट मैंने इसके लिए लिखा है ना, स्टार्ट सडनली. ब्रेकआउट इज बेसिकली कोई भी चीज, जैसे वॉर ब्रेकआउट हो जाता है, कोई भी चीज जो स्टार्ट हो जाए सडनली, अनवांटेड थिंग, डिजीजेस ब्रेकआउट हो जाती हैं. ओके, इन दैट केस वी यूज ब्रेकआउट वर्ड. ओके नीतीश, some unwanted things that start suddenly, that is called breakout. Conflict we use for run in. Run in we use for conflict and quarrel. So run in E will be matched with third. So I have written it clearly. Okay. Flare, you can say start suddenly, flare up, बढ़ जाना, incite. Okay. भड़क जाना. So in that case we can use. Okay. Now this was all about revision session. Let's start today's vocabulary. So the first word of today's session is litter. Litter, you know, littering, litter, these all we have used. It is a verb. This we basically use for making something untidy.
मिस अप समथिंग, किसी भी चीज को बहुत ज्यादा आपने मिस अप कर दिया, टू मेक समथिंग अनटाइडी, किसी भी चीज को अनटाइडी कर दिया, सो इन दैट रेफरेंस वी यूज दिस वर्ड लिटर, उन सारे केसेस में हम लिटर वर्ड का यूज करते हैं, ओके। सो इट इज अ वर्ब, बेसिकली लिटर इज व्हाट, इट इज अ वर्ब। The next word we have is litigation. Litigation भी हमने पहले देखा है। Litigation basically we call to the process of taking legal action, कि जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स वगैरह चलती है, लॉ सूट, दैट इज कॉल्ड लिटिगेशन, ओके। सो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग लीगल एक्शन, लॉ सूट, कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स वगैरह चलती हैं, दैट इज कॉल्ड लिटिगेशन, ओके। नेक्स्ट वी हैव द वर्ड विथहोल्ड। विथहोल्ड बेसिकली वी कॉल टू सप्रेस और होल्ड बैक, मतलब अपने इमोशंस को, अपनी चीजों को सप्रेस कर लेना, होल्ड बैक कर लेना, सो दैट इज बेसिकली कॉल्ड विथहोल्ड। सो विथहोल्ड इज बेसिकली अ वर्ब। विथहोल्ड इज व्हाट, वर्ब। यस, लॉ सूट, ज्योत्सना, करेक्ट। इट विल बी टू लेंथी, बट राइट नाउ आई वोंट सजेस्ट अपूर्व, right now I won't suggest because it will take so much time, so right now you should focus only on your examination till mains. Next, बायो बबल। आई होप पैंडेमिक के बाद से आप सबके पास सामने बायो बबल वर्ड बहुत ज्यादा कॉमन हो गया होगा, ओके। यस, विथ होल्ड बेसिकली वी कॉल टू सप्रेस, होल्ड बैक, किसी भी चीज को आप जो है कंट्रोल करके रखते हैं, यू आर नॉट ट्राइंग टू एक्सप्रेस इट और समथिंग लाइक दैट, ओके। सो दैट इज कॉल्ड विथ होल्ड, ओके। सो बायो बबल बेसिकली वी कॉल टू, ये पैंडेमिक में ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड था, जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वारंटीन वगैरह वर्ड था, उतना ही ज्यादा बायो बबल भी था, कि सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट आइसोलेटेड फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ कोविड 19 इन्फेक्शन। कि कोविड 19 इन्फेक्शन से जो हमने मतलब कि एक सिक्योर सेफ एनवायरनमेंट बना के रखा था, जहां पर हम अपने आप को आइसोलेट कर लेते थे, ताकि हम बाहर के वर्ल्ड को इन्फेक्शन या हमारे तक इन्फेक्शन ना आ सके, सो दैट इज बेसिकली कॉल्ड bio bubble. Neeraj, find the error in this sentence. Men withholds their emotion. What is wrong in this sentence? Quickly find error. Yes, क्रिकेटर्स के लिए भी यूज किया, बेसिकली ये गेम है, खाली क्रिकेटर्स नहीं, किसी भी स्पोर्ट्स में आप इसका यूज कर सकते हैं, किसी भी को, वो पिच वगैरह में दैट दे क्रिएट। Men is correct. Men is, there is no error in men, but men is plural, so you cannot add s or yes with this verb. Men withhold their emotion. So men is plural, so you have to use a plural verb. Or you can write a man. Only man you cannot write a man, means in general you are talking about the word. Okay. Next we have the word that is stifling. So stifling basically we call to suffocating, make one feel constrained or oppressed. जैसे बहुत ज्यादा आप कहेंगे कि अगर जैसे suffocating environment we have ना, कि जहां पर आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर हो, बहुत ज्यादा रूल्स हो, इतने ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस हो कि आप खुल के सांस ना ले पाए, जैसे कहते हैं ना, दम घुटता है हमारा। तो ये सफोकेटिंग किसी भी एनवायरनमेंट के लिए यूज हो सकता है। अगर सपोज आपके घर में एक ऐसा माहौल हो जहां किसी भी काम को करने की परमिशन आपको ना हो, ओके, यू कांट टेक एनी स्मॉल डिसीजन, यू कांट डू एनीथिंग ऑन योर ओन, या कोई ऐसी ऑफिस हो जहां पर आपको पूरी तरह से बॉस के ऊपर डिपेंडेंट रहना होता हो, आप खुद के उससे कोई भी डिसीजन, कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं, सो दैट बेसिकली कॉल्ड स्टिफलिंग। सफोकेटिंग मेक वन फील कॉन्स्ट्रेंट और ऑपरेट, कि आप एक को मतलब बहुत ज्यादा कॉन्स्ट्रेंट ऑपरेट फील अपने आप को समझते करवाते हैं, सो दैट इज कॉल्ड सफोकेटिंग। यस, प्रेशराइज्ड एनवायरनमेंट यू कैन से। Then we have the word usher, sorry, usher. Usher can be used as a noun also. As a noun, this we use for a person who guides you to the seat. Okay, so assistant you can say. Assistant. Basically, this we use for theater and all. A person who guides you till seat, a person who escorts you till seat, की जो आपको सीट तक लेके जाता है थिएटर वगैरह में. So that person is basically called usher. ये एसएससी में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बहुत पूछा जाता है, कि पर्सन हु लीड्स यू टिल सीट, जो आपको सीट तक लेके जाता है, जो आपको सीट का रास्ता दिखाता है, so that person as a noun is called usher. Usher can be used as a verb also. So as a noun it can be assistant, helper, all these things. Basically ये assistant किस केस में, आपको सीट वगैरह दिखाने के केस में यूज होता है. And usher can be a verb also. Stifling can be an adjective and a verb. Okay. Bio bubble तो आपको पता है, noun है, phrase है. Okay. So help, assist, guide, escort, all these can be the synonyms. ये सारे के सारे synonyms हो सकते हैं. Yes, bio bubble is basically for COVID-19. उसी के टाइम पे ये वर्ड यूज हुआ था. सो usher can be a verb. So as a verb it means to help someone, to assist someone, to guide someone, to escort someone. So as a verb it means this, and as a noun it means assistant, helper. Okay.
usher in, not fixed. Okay, usher in generally we use them often, but I cannot say that कि हाँ ये हमेशा इसी के साथ ही यूज होता है. Next word we have is impetus. Impetus basically we call to, it is a noun, and this we use for stimulus, momentum, motivation, encouragement. इन सारे के केस में हम यूज करते हैं impetus word का. Okay, encourage. So to encourage someone, stimulus, momentum, motivation. So it is what encouragement basically. It is a noun. So it is a noun. So impetus is what? It is a noun. Okay. Next word. Nascent. Nascent is basically an adjective. And nascent word भी आपके एसएससी में सॉरी बैंकिंग में बहुत बार पूछा गया है. Nascent basically we call to developing, emerging, fledgling, all these. कि कोई भी चीज budding you can say. Okay, budding. So in sari cases में you can use the word nascent. So developing, emerging, fledgling, budding, इन सारे कोई भी चीज जो अभी start हुआ हो progress करना. Okay, so in that case we use the word nascent players we say. Okay, so emerging players, nascent actors, emerging actors. So in सारी cases में जो अभी अभी किसी भी तरह से rise कर रहा, rising period में है, so that is basically called nascent. Okay, nascent moon we have, कि जो मून छोटा सा होता है, नया होता है, निकलता है धीरे धीरे, बड़ा होता है, so that is also we can say. Okay, incremental. Incremental is an adjective. Happening gradually in a small amount, कि कोई भी चीज थोड़ा हो, मतलब धीरे लगातार हो बट बहुत थोड़ा थोड़ा हो. तो steady progress you can say, कि थोड़े थोड़े अमाउंट में कोई चीज लगातार हो रही है, so that is called incremental. So something that is happening gradually, something that is gradual but in a small amount, कि थोड़ा थोड़ा वो continuously हो रही है, something that is happening, so that is called incremental. So adjective, it is an adjective. Okay, the next word we have is languishing. So languishing basically we call to failing to make progress or weakening. कोई भी चीज जो कमजोर हो जाती है, or something that stops progressing, so that is called languishing. It is basically a verb or an adjective. ये basically verb या adjective की तरह use होता है. So languishing means failing to make progress or something that is weakening is called languishing. Okay. Next word we have is pecking. Pecking basically we call to striking or hitting something. Pecking at. Pecking basically we call to striking or hitting something. Okay. काफी vocabs हैं आज. Next word we have is relegation. So relegation simply you can say demotion. Relegation and demotion, these are synonyms. Okay. So relegation also we call to woodpecker. Yes. So woodpecker भी क्या करता है, धीरे धीरे हिट करके कहीं पर होल कर देता है. So woodpecker, yes. So वहां से भी आप ये वर्ड ले सकते हैं because it strikes something. Okay. So striking, hitting, that is called pecking. So pecking is what? It is a verb. Relegation is a noun. Relegation we call to the act of assigning to an inferior rank or position. किसी को भी आप उसकी position वगैरह rank वगैरह कम कर दीजिए, so जिसको simply आप कह सकते हैं demotion. So demotion and relegation, these can be the synonyms. ये सारे के सारे synonyms हो सकते हैं. I hope all these words are clear, right? Incremental, happening gradually in a small amount, languishing, failing to make progress, weakening, all these are clear. Pecking, striking, hitting, all these things. Okay. Now we have idioms and phrases. So the first idiom of today's session is set the ball rolling. Actually इसके बहुत सारे words हैं. You can say set the ball rolling, get the ball rolling, have the ball rolling. So it basically means make a start. To start an activity, किसी भी चीज को start कर देना. Start an activity. किसी भी चीज को भी से ना let the ball set the ball rolling. Okay, have the ball rolling, get the ball roll. It is not only necessary कि rolling ही आप use करें, roll का भी use हो सकता है वहां पर. Okay, so it basically means make a start or to start an activity, किसी भी activity वगैरह को start कर देना. Okay, next, keep the ball rolling. We say ना keep the ball rolling, so continue an activity. So in all these references we use. Home and away, actually it is not an idiom. It is a basically a term. Home and away basically we call to having one game played at each competitor's home ground. कि जो भी competitor है सबके घर में एक मतलब सबके home town में सबके land पर at least एक game play हो. So that is basically called home and away. So having one game played at each competitor's home ground, this is not an idiom, it is just a phrase. Okay. Next. Phrasal verbs. Kick around. Kick around has so many meanings. इसके बहुत सारे meaning होते हैं. Kick around basically we call to lie unnoticed or hidden. कि कोई भी चीज जो मतलब notice में ना हो, जो hidden हो, छुपी हुई हो, so that is called kick around. Okay, to lie unnoticed or hidden, कोई भी चीज unnoticed हो, hidden हो, दबी हुई हो, जिसको कोई मतलब that is not into prominence, that is not into prominence, कि जो बहुत ज्यादा famous ना हो, so that is called kicking around. Kick around. Okay,
सो किक अराउंड, किकिंग अराउंड, इट इज बेसिकली अ फ्रेजल वर्ब। तो यहाँ पर इसके फॉर्म्स चेंज हो सकते हैं। इट कैन बी किक, इट कैन बी किक्ड, इट कैन बी किकिंग। ओके, then kick around also we call to wander, to pass time aimlessly. Kicking around since you have your examinations round the corner. कि stop kicking around means what? कि stop wandering or passing time aimlessly because आपके examination बिल्कुल करीब में है. So that is called kick around. Okay. Next we have kick around also means to discuss an idea. कि किसी idea को discuss कर देना, so that is also called kick around. Okay. Hi Mehak. So I hope all these meanings of kick around is clear to you all. इसके अलावा भी बहुत सारी meanings होती हैं. Okay. So to lie unnoticed or hidden. Now ये इतने सारे मीनिंग मैंने आपको बताए हैं. Now when we will go through the article, so you will have to tell me कि what can be the meaning of kick around. Okay. Next we have live up to. Live up to means fulfill expectation. You all will have to live to the dreams of your parents. So live up to means you have to fulfill the expectation of your parents. Okay. Hold together we call to remain united. सबको bind करके रखना, so remain united, so that is called hold together. So these are the phrasal verbs of today's session. ये सारे के सारे आपके phrasal verbs हैं. Okay. Before starting article, see, still I find there are many students who are still confused कि कौन सा कोर्स परचेस करना चाहिए. Okay. तो देखिए ये आपके नीड के ऊपर डिपेंड करता है. जैसे अभी किसी ने एसबीआई पीओ ले लिया, नाउ दैट पर्सन वांट्स कि मैम क्या एसबीआई पीओ को सुपर एलीट में कन्वर्ट करा सकते हैं. देखिए आई रिकमेंड सुपर एलीट बिकॉज आप कितने भी क्लासेस कर लेना, इन एवरी क्लास यू विल गेट समथिंग और द अदर न्यू. यू विल ऑलवेज गेट. अगर आपको कुछ नई या नहीं भी मिलता है, एटलीस्ट देयर विल बी रेपिटेशन ऑफ द कांसेप्ट. ओके, एक ही चीज है, रिवाइज आपकी हो जाती है. सो आई कमेंट, क्योंकि बहुत ज्यादा अमाउंट में डिफरेंस नहीं होता. अगर आप देखेंगे किसी पर्सनल कोर्स के सुपर एलीट में, स्पेशली व्हेन वी हैव ऑल दिस, अगर आप कोड वगैरह अप्लाई करके ऑफर ले लेते हैं, वहां पर सुपर एलीट मेरे अकॉर्डिंग ज्यादा बेटर हो जाता है, बिकॉज आपको सारे कोर्सेज के एक्सेस मिल जाते हैं, प्लस आपकी वैलिडिटी भी 6 मंथ्स या 12 मंथ्स की आप अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं. सो इफ यू डोंट वांट टू गो फॉर एनी स्पेसिफिक बैच, अगर आपको लगता है कि नहीं अभी आपको प्रिपरेशन स्टार्टिंग स्टेज पे है, you are at the starting stage of your preparation, so then definitely you should go for banking super elite. This is one of the best buy plans on Oliveboard platform. Bank super elite is for them who wants classes and mock test both, क्योंकि यहाँ पर आपके हर लेवल के मॉक टेस्ट, हर लेवल के क्लासेस, सारी चीजें इंक्लूडेड है. एलपीएस इंक्लूडेड है. एलपीएस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. जब आप लोग देंगे देन यू विल कम टू नो एलपीएस. ओके. So all these things are important features of banking super elite. So if there is anyone interested, then definitely you can go for super elite. Okay. But if you want to continue only with the mock test, then you can go for banking elite. So banking elite is only for mock test, but in banking elite, you will not get any live classes, LPS. All these things are not included in banking elite. Okay. Next. Krishendra, they will reply, I guess. I will forward your doubt. Okay. मैं एक बार आपका doubt. You just give me your contact number. If possible here, या आप doubt group पे, if you are there on doubt group, so please give me your contact number. I will forward your contact number. They will contact to you. So this is my code Saba. See, we are also launching SBI PO batch 2, target batch 2 also we are launching. Okay. So those who are interested in joining SBI PO batch, you can go for this batch also अगर आपने miss कर दिया, because it is going to be pre-plus mains batch. So this batch we are going to launch from 12th of October, means आज 11 कल 12, कल से 12th of October, कल से ये start है. Okay. So you can use my code Saba for additional discount. कुछ भी आप Oliveboard पे purchase करना चाहते हैं, mock test, PDF courses, anything that you are interested in purchasing on Oliveboard platform, do remember to use my code Saba for additional discount. And this is my Telegram ID, Learn English with Saba. So you all can join this Telegram ID, Telegram channel for updates on every session and for PDF. हर सेशन के अपडेट के लिए, पीडीएफ के लिए आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लर्न इंग्लिश विद सबा. So let's start today's session. First of all, tell me what is the meaning of this word kicking around. See, since this is used as an this is used in title itself, so it won't be possible for you to guess the exact meaning. But still, baby, I will keep it bilingual so that no one has to face problem. Okay, English or Hindi, I will keep it bilingual. Let me hide myself so that you can go through this. एक बार क्विकली आर्टिकल पढ़ के मुझे बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस किकिंग अराउंड, बिकॉज दिस मीनिंग यू विल गेट whenever you will start this.
Quickly go through this article. Right? Now, we will come to the meaning of kicking around. On future of football in India. Basically, this article is on future of football in India. Okay. The big Super League is crucial. Crucial means important फॉर इंडियन फुटबॉल. ये आईएसएल जो है, जैसे हर गेम में, जैसे क्रिकेट में यू नो कि आईपीएल इज इम्पोर्टेंट, क्रिकेट के लिए यू नो T20 वर्ल्ड कप, ऑल दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट्स फॉर क्रिकेट. ओके, सो इन द सेम वे आईएसएल, दैट इज इंडियन सुपर लीग, इज क्रूशियल फॉर इंडियन फुटबॉल. फुटबॉल के लिए एक ये बहुत इंपॉर्टेंट गेम होता है, दैट इज इंडियन सुपर लीग. जैसे आईपीएल होता है, इन द सेम वे वी हैव आईएसएल आल्सो. ओके, देन बट सो फार इट हैज फेल्ड टू लिव टू इट्स प्रॉमिस. तो नेगेटिव सेंस आ रहा है कि अगर अभी की बात करें तो अब तक जो है ये अपने प्रॉमिस को फुलफिल नहीं कर पाया है. सो वॉट एवर एक्सपेक्टेशंस, वॉट एवर प्रोमिस इट मेड, इट कुडंट फुलफिल इट्स प्रॉमिस, कि वो फेल हो गया है. ओके, so with the ninth season of the ISL Indian Super League commencing means starting. So what is the opposite of the word commencing? Commencement. What can be the exact opposite of the word commencement? Cessation. Yes. So commencement we basically call to starting, and cessation we call to ending. Okay. So stopping is a common word. So cessation basically ending is stopping. Commencement we call to starting. Okay. In Kochi is absolutely correct because Kochi is the name of district. So जब भी किसी district, Kochi is district or state it is? No, it is district only. तो ये कोची में start हो रहा है, तो जब भी हम किसी बड़े जगह की बात करते हैं, whenever we talk about any district, any city, so we use in. Okay, वहां पर हम in का use करते हैं. It is absolutely correct. So this ISL is starting in Kochi. ये कोची में start हो रहा है. And the ball set to roll out, okay, at FIFA Under 17 Women's World Cup in Bhubaneswar from Tuesday. And Tuesday से भुवनेश्वर में, उड़ीसा में जो है ये पूरा बॉल, मतलब पूरे एक्टिविटी स्टार्ट होने के लिए रेडी है. दैट इज FIFA Under 17 Women's World Cup that is going to start in Bhubaneswar from Tuesday. Football in India can finally put behind a chaotic and unpleasant period that was littered with boardroom battles and litigation in the nation's highest courts. Now, with these two important matches, ये जो दो important matches हैं, that we use, it is a city. So for city we use, जैसे whenever we talk about big cities, Bangalore in. Whenever we talk about particular place, like at HSR in Bangalore, okay. So at cannot place in Delhi. So whenever we talk about particular place, there we use at. Whenever we talk about big places like cities name, state name, country name, so in that cases we use in. I hope this point is clear. Okay. So see, with these two mega events, ये दोनों बहुत बड़े events है, FIFA Under 17 Women's World Cup and ISL. Okay, so all these things are going to start. ठीक है, ये सारी चीजें start हो रही हैं. So football in India can finally put behind a chaotic and unpleasant period. कि अभी तक फुटबॉल का जो पीरियड रहा है, जो फेज रहा है, दैट हैज बीन वेरी क्योटिक. क्योटिक यू नो, फुटबॉल पे हमने काफी एक दो आर्टिकल भी किया हुआ था. सो क्योटिक यू नो, अपसाइड डाउन, बिल्कुल टर्मोइल वाली सिचुएशन में था. एंड अनप्लेजेंट पीरियड दैट वाज लिटर्ड, कि वो पूरी तरह से मिस हो चुका था, कोई भी चीज की क्लैरिटी नहीं थी. विद बोर्डरूम बैटल्स, की आपस में ही जो टॉप मोस्ट अथॉरिटीज थे उनके अंदर में ही आपस में बैटल चल रहे थे. एंड लिटिगेशन इन द नेशंस हाईएस्ट कोर्ट्स, और इसके बहुत सारे केसेस वगैरह वहां कोर्ट में चल रहे थे. सुप्रीम कोर्ट में इसके बहुत सारे केसेस वगैरह चल रहे थे. So the two competitions have received fresh leases of life. अब ये जो दोनों competition है, इनके लिए एक new beginning है. They have received fresh lease of life. ISL has returned to the traditional home and away format,
आफ्टर टू स्टिफलिंग सीजन, स्टिफलिंग मीन सफोकेटिंग सीजन इन अ बायो बबल, कि अभी तक क्या था, बायो बबल में ही वो खेला जाता था, एक सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट में प्ले होता था। बट अब जो है वो अपने ट्रेडिशनल होम एंड अवे फॉर्मेट में आ चुका है, कि मतलब एक दूसरे के होम पे जाकर के, मतलब एक दूसरे कंट्री में जाकर के हम इसको प्ले कर सकते हैं। ओके, सॉरी, होम एंड अवे इट मीन्स एक दूसरे स्टेट्स वगैरह में जाकर के वी कैन प्ले दिस। ओके, while the World Bank is back in country's embrace after seemingly slipping out of it once in 2020 because of COVID-19, and then 2 months ago when FIFA suspended all India Football Federation and withheld the hosting rights. Okay, अब देखिए, एक तो कोविड 19 की वजह से ये चीजें क्या थी, कि बिल्कुल ना के बराबर, मतलब एक तरह से इनकी लाइफ खत्म ही हो चुकी थी। सो दे हैव गॉट अ न्यू लाइफ, क्योंकि आपको पता होगा कि एआईएफएफ ने ये फीफा ने एआईएफएफ को सस्पेंड कर दिया था 2 महीने पहले, 15th ऑफ अगस्त को ये सस्पेंशन हुआ था, यू नो दिस थिंग। सो बिकॉज ऑफ दिस सस्पेंशन, बिकॉज ऑफ 2020 कोविड 19, ये जो वर्ल्ड कप को होस्ट करने का जो एक राइट था, वो ऑलमोस्ट इंडिया के हाथ से जा चुका था। बट एनी हाउ काफी एफर्ट्स के बाद वी गॉट दिस राइट बैक, हमें वापस से ये राइट्स मिला कि हम वर्ल्ड कप को होस्ट कर सके। सो ऑफ कोर्स दीज ऑल थिंग्स आर व्हाट दीज ऑल थिंग्स हैव गिवन अ न्यू लीज टू न्यू लाइफ टू फुटबॉल। ओके, under the new AIFF administration, the expectation is for these two championships to usher in a productive era for the sport in India. So, अब जो AIFF का आपको पता है कि पहले वहां पे वो कोर्ट का कोई पर्सन रूल कर रहा था, बट नाउ वी हैव मेड वन एडमिनिस्ट्रेटर ऑल्सो, एक पर्सन भी बना दिया हमने, मतलब चेयरमैन इज ऑल्सो देयर। सो विथ ऑल दीज न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, AIFF का जो पूरा कंप्लीट नया एडमिनिस्ट्रेशन है, expectation for these two championship, that is ISL and FIFA Women World Cup, okay, Women World Cup, to usher means to help in, assist in productive era for sports in India. कि we have some hope कि इन सारी चीजों की वजह से स्पोर्ट्स का एक फिर से एक प्रोडक्टिव एरा इंडिया में आएगा, एंड दिस these two leagues, these two championship will help in bringing that productive era in India. Yes, usher in here also we have used. Okay, so help in bringing. The ISL is crucial for players' preparation ahead of the 2023 AFC एशियन कप। कि आईएस इंडिया, मतलब प्लेयर्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एक तरह से प्रिपरेशन भी हो जाती है अहेड ऑफ बिफोर एएफसी एशियन कप, की 2023 में एएफसी एशियन कप होने वाला है। तो अगर ये लोग आईएसएल का मैच खेल लेते हैं एंड इफ दे परफॉर्म वेल इन दिस, सो ऑफ कोर्स इट विल सर्व एज अ प्रिपरेशन फॉर देम। ओके, ये इनके प्रिपरेशन के लिए भी यूज होगा। A good performance at the Premier Continental Tournament can enhance the nation's standing। कि अगर यहाँ पर हमने परफॉर्मेंस अच्छा दे दिया तो ऑफ कोर्स नेशन की जो स्टैंडिंग है फुटबॉल में वो कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी। The World Cup may provide impetus, impetus means encouragement, boost to further the overall development of women's football in country, which is still in its nascent stage। कि अब ये जो वर्ल्ड कप है, अगर अंडर 17 वर्ल्ड कप इंडिया में जो हो रहा है, ये कहीं ना कहीं एक तरह से इंकरेजमेंट देगा, एक तरह से बूस्टअप करेगा वुमेन फुटबॉल को कंट्री में। एंड दिस वुमेन फुटबॉल इज स्टिल इन इट्स डेवलपिंग स्टेज, ये अभी भी बहुत ज्यादा फ्लरिश नहीं हुआ, ये अभी भी अपने राइजिंग स्टेज पर है। So once we are holding all these World Cup and other things in our country, so of course this will provide encouragement, it will provide boost, impetus to the team. It was 8 years ago that ISL was introduced with the aim of revolutionizing the game। कि ISL का इंट्रोडक्शन 8 साल पहले हुआ था, and its aim was to revolutionize the sport, that is football। पूरे उसको फुटबॉल को revolutionize करने का इसका टारगेट था। I'm keeping it bilingual. I have to keep it bilingual, yo man. If there is anything that you cannot follow in English, please let me know. I will translate that in English. Okay. Sorry, if you can't follow that in Hindi, please let me know. I will translate that in English. Okay, but I have to keep it bilingual. So this ISL was introduced 8 years ago, and its aim was to change the entire game. Revolutionize means change for the betterment. So its main aim was to revolutionize the entire sports, that is football. Okay, football को पूरी तरह से change करने का इसका aim था। Months before that, in December 2030, India had won the rights to host its first global competition, the 2017 FIFA Under-17 World Cup. So this we are talking about 8 years back. ये 8 साल पहले के बारे की बात हो रही है। India won the rights to host its first global competition. The first time India got the right to host football global competition, that is 2017 FIFA Under-17 World Cup in 2017. Okay, but since then,
progress has only been incremental. See, after 7-8 years also we cannot make great progress in football. फुटबॉल में अगर आप देखेंगे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं और बहुत ज्यादा प्रोग्रेस भी नहीं हुआ है. So the progress has been only incremental. Incremental here means in a small amount. Okay, बहुत थोड़ा ही प्रोग्रेस हुआ है फुटबॉल में. The highest top-down approach. Top-down approach, actually, we have two approach. The one is top-down approach and another is bottom-up approach. I hope you all might be knowing. Top-down approach and another approach is bottom-up approach. Okay. So top-down approach basically we call to where only the topmost leaders or the topmost authorities of any particular organization, जो top authorities होती हैं वही सारे crucial decision, वही सारे important decision ले लेती हैं. So that is called top-down approach. Whereas bottom-up approach means कि every employee, every person involved is asked to share his or her suggestion, कि हर person से उसके suggestion को demand किया जाता है. तो यह बेसिकली आईएसएल का क्या था, वो टॉप डाउन अप्रोच था कि जितने भी डिसीजन होते थे वो बिना प्लेयर्स या बिना किसी और स्टेक होल्डर से डिस्कस किए हुए, सो दे यूज्ड टू ओनली टेक ऑल द इंपॉर्टेंट डिसीजंस. द लैक pyramid of leagues held together by the principle of promotion and relegation and the absence of qualitative reforms at the grassroots have resulted in India languishing at 106 in the world rankings and at 19 in the Asian pecking order. Now here what is the sense we are getting? Because of all these things, why there cannot be great progress in football? Football में ज़्यादा progress क्यों नहीं हो सका? So the first reason is ISL's top-down approach because they never considered the suggestion, the discussion. They never thought to discuss anything with all the players. कि वो बाकी किसी टीम से या stakeholders के साथ कुछ भी discussion नहीं करते थे. The lack of a pyramid of leagues held together by the principle of promotion and relegation. ये जो relegation, demotion, promotion के जो चक्कर चल रहे थे, the absence of qualitative reforms at the grassroots, कि कोई भी qualitative reform नहीं हो सका था. Grassroots basically we call to base में, बेसिक लेवल से कोई भी रिफॉर्मेशन नहीं हुआ था. सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स इंडिया इज एट 106 इन वर्ल्ड रैंकिंग. कि वर्ल्ड रैंकिंग में अगर इंडिया की बात की जाएगी, क्वालिटेटिव मीन समथिंग दैट इज सब्सटैंशियल, क्वालिटी. ओके, some good reforms, major reforms that can improve the quality of the sports. So the ranking of India in football is 106 in the world ranking and at 19 in the Asian pecking order. अगर एशियन कंट्रीज में इंडिया की फुटबॉल में आप रैंकिंग देखेंगे तो इट इज एट 19th रैंक. सो दिस लो रैंकिंग, ये वीकनिंग, लैंग्विशिंग हियर मींस व्हाट, वीकनिंग. फुटबॉल इतना कमजोर क्यों पड़ा? बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस, कि ये सारे ड्रॉबैक्स हैं. लैंग्विशिंग वी कॉल टू वीकनिंग. ओके, नेक्स्ट. The 2026 FIFA World Cup will be a 48 team affair. अब 2026 में जो FIFA World Cup होगा वहां पर 48 टीम होंगी, expanded from the current 32. So this can be an important question of GA कि at present we have 32 teams, but in 2026 there will be 48 teams. Okay, 8 spots are guaranteed for Asia. Out of these 48, there will be 8 spots. Spots basically we call to points, places. So 8 places will be for Asia. कि कम से कम 8 places जो है वो इंडिया के लिए होंगी. Okay, are guaranteed for Asia, but Asia के लिए 8 points होंगे, but India has to at least be in the top 10 at the continental level to have a realistic chance of qualification. कि इंडिया को top 10 में होना चाहिए होगा. Okay, होना ही पड़ेगा, so that to have a realistic chance of qualification. The 17 वर्ल्ड कप डिड ट्रिगर अ चेंज, कि ये जो अंडर 17 वर्ल्ड कप है ये कोई ना कोई चेंज लेके आया था. ट्रिगर मींस इट स्टार्टेड अ चेंज. bunch of players including the likes of Suresh Wangzam, Aniket Jadhav, Laling Mavia Apuya flourished together at AIFF's developmental side Indian Arrows and then went on to become regular for their ISL clubs and eventually secured berths in the Indian national team. तो ये जो अंडर 17 वर्ल्ड कप था ये कुछ ना कुछ चेंज, पॉजिटिव चेंज लेके आया है, एंड दैट इज व्हाई वी हैव सम गुड प्लेयर्स. ओके, so these are the names of players, and these players they first started with this ISL and now they have secured a berth. Secured berth means what? They have secured a place in Indian national team. So now these players are the part of Indian national team. Such clear cut trajectory does not exist for women, but ये चीजें अभी भी women के लिए नहीं है. अब देखिए यहाँ पर अगर आप ग्रामर का रूल देखेंगे तो ऑफ कोर्स इट इज नॉट फॉलोइंग एनी पर्टिकुलर रूल. ओके, so if the under 17 world cups can help play a similar pathway, कि ये जो women's का वर्ल्ड कप है अंडर 17 अगर उसी वे में अगर ये भी उसी तरह का पाथवे रख सकता है, it would have done its job. तो कहीं ना कहीं ये भी अपना काम कर दिया होता.
Can we use but India has to be at least in the top 10? See, here we are saying that 8 points are guaranteed for Asia. कि Asia के लिए at least Asia will get 8 places. Okay, 8 teams will participate. It might be, it can sense. But India has to be at least. But उसके लिए India को at least top 10 में होना चाहिए, होना पड़ेगा at the continental level, so that it has a realistic chance of qualification, ताकि वो qualify कर सके बाकी सारी teams के साथ. So for that case, India will have to be at 10. So yes, but is absolutely correct. कि we have 8 points, but for that India will have to be at top 10 at the continental level, so that India can have a fair chance of qualifying in that World Cup and other things. Okay. Initial games we are talking. India has to at least be, कम से कम top 10 में आना पड़ेगा, top 10 में से कम जाना पड़ेगा. So that is the sense we are getting. Okay. India will have to be at least in the top 10 at the continental level. At this level, it will have to be in top 10. It will do its job where you are talking about. ITS, its job, it is can't be used because it is means it is. So it is job is incorrect. For India we have used India, it would have done its job. वो अपना काम कर दिया हो तब तक. मतलब we could have at least some improvement in under 17 World Cup also. That is the sense we are getting. But here in subordinate clause also we have used modal that is not grammatically correct. We don't follow this as per our core grammar rule. Okay. So grammar rule के according हम लोग नहीं कर सकते. Yes, it is basically emphasizing the sense. So here you cannot make out sense as per the grammar rule that we see in sequence of tenses. Because whenever we have conditional sentence, we do not use modal in subordinate clause. So that is the sense we are getting. Did trigger is correct. Actually, we use do, does, did in affirmative sentence for emphasizing something. So do, does, did plus V1, this we use in affirmative sentence to emphasize someone. And to emphasize something. किसी भी चीज को emphasize करने के लिए हम लोग use करते हैं. Okay. The under 17 World Cup did trigger a change. Did trigger a change मतलब कि वो कुछ change लाया है, तो emphasize करने के लिए हमने use किया है. Okay, well. After did we cannot use V2 form because do, does, did is always followed by V1 form, and this we use to emphasize something. किसी भी चीज को emphasize करने के लिए use किया जाता है. Actually, this modal itself is not suitable here. Apurv. This modal itself is not suitable here. So how they have used it, we cannot say anything. Now find the error here. Find the error in this sentence. These are basic things. Well, these all things should be very clear. Not withholding. Correct, Krishnend. Others quickly. Some are saying withholding, some are saying withheld. See, the World Cup is back in the country's embrace. Embrace basically here we say ki in our like in it is in our hand. Embrace basically we call to World Cup, we got it back in our hand because वो बिल्कुल जाते जाते मतलब निकल चुका था. It slipped from our hand. Okay, but फिर भी किसी तरह से हमने वापस ये World Cup hosting rights हम वापस पा लिए हैं. So the World Cup is back in the country's embrace after seemingly slipping out of it. कि वो हमारे हाथ से वो बिल्कुल निकलता हुआ था, दिख रहा था. Once in 2020 because of COVID-19, एक तो 2020 में because of COVID-19, and then 2 months ago we are talking about past. कि 2 month पहले when FIFA suspended. So here we are talking about past. So we need a past verb form. We need past verb form. Okay. So FIFA suspended. Suspended is the V2 form, the All India Football Federation, and withhold. So after and we have to maintain parallelism because this happened 2 months ago. कि FIFA suspended AIFF and withheld the hosting rights. कि hosting right को ये suppress कर चुका था. So withhold is the V1 form. Withhold is the V1 form and the V2 form is withheld.
Withheld is the V2 form. Okay, withheld. So V3 form is also withheld, and ing form is withholding. So since we are talking about past, because this action happened 2 months ago, ये 2 महीने पहले हुआ था, so that is why we have to use a verb form of past tense. So simply V2 form will be used here. Yes, kicking around here means passing time aimlessly. Yes, because we are getting the negative sense. So basically, till now, cricket is couldn't do something substantial. Sorry, cricket में बार-बार आ रहा है. It is football basically. तो कुछ भी बहुत ज्यादा substantial ये नहीं कर पाया है. So in that reference, we have used the word kick around. Okay. It remained inactive, you can say. So kicking around is basically used for remaining inactive. Okay. Remaining inactive. Achha, yesterday there was a confusion in the usage of none. See, there is a difference between none and no one. First of all, you should know. No one is basically a pronoun. Okay. None to be used as a pronoun. But just no one was present. It is absolutely correct. No one was present. Okay. But none के साथ there is a none was present, that is correct. None were present, that is also correct. None के साथ बहुत सारे confusions हैं कि none के साथ आप was का भी use कर सकते हैं, were का भी use कर सकते हैं. Okay. जैसे if I say none of the, none of the, so none of the के बाद आपका जो noun होगा that is always plural, क्योंकि of बाद as you know noun is always plural. Okay. So always plural, but verb की जो बात आती है generally as per strict grammarian rules, as per strict grammatical rules, verb should be singular. Verb हमेशा क्या होता है, singular होना चाहिए. Okay. None of the noun plural and verb singular. But these days if you see this, I am talking about strict grammar rule. ये बहुत ही strict grammar rule की मैं बात कर रही हूँ कि वहां पे verb आपका क्या होना चाहिए, singular होना चाहिए. अगर आप अभी की बात करेंगे, मॉडर्न इंग्लिश की बात करेंगे, तो आपको नन के साथ कभी कभी प्लूरल वर्ब भी दिख जाएगा. प्लूरल वर्ब, एंड यू कैन नॉट क्लेम इट रॉन्ग. आप इसे रॉन्ग नहीं कह सकते, बिकॉज एज पर मॉडर्न ग्रामर नन कैन बी फॉलोड बाय प्लूरल वर्ब एट ऑल्सो. नन के साथ प्लूरल वर्ब भी यूज हो सकता है. इज इट क्लियर? देखिए, इन सारी चीजों से एग्जामिनर कभी भी क्वेश्चन जनरली नहीं देता. एसएससी में भी मुझे बहुत रेयरली ही क्वेश्चन दिखते हैं जबकि आप देखिए ऑफ दैट पार्ट नाउन ऑलवेज प्लूरल, देयर इज नो कंफ्यूजन इन नाउन. There is no confusion in noun because of after of the noun will always be plural, whether it is none of the, any of the, whatever it is. But अगर आपका verb की बात करें तो as per strict grammatical rules it should be singular verb. But in modern English we also use plural verb and that is considered correct. वो सही consider किया जाता है. और इससे इन सारी चीजों में जहां पर आपस में ही confusion है कि grammatical rules में ही confusion है, तो जनरली व्हाट आई हैव सीन, व्हाट आई हैव ऑब्जर्व कि एग्जामिनर आपको इन सारी चीजों से क्वेश्चन कम देता है. जैसे एक क्वेश्चन और मुझे दिखा था, शी इज एज गुड एज आई एम और मी, तो वहां पर भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस वाला. तो ये कुछ रूल्स ऐसे हैं जो काफी ज्यादा यू कैन से कि जहां पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, कहीं पर भी एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलेगा आपको. तो ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में, रियल एग्जामिनेशन में कम ही देखने को मिलेंगे. मॉडर्न ग्रामर बेसिकली रूल्स, देयर आर ग्रामरियन. बहुत सारे रूल्स ऐसे होते हैं जहां पर आप देखेंगे. यस, यस, वन ऑफ द, लाइक इन द केस ऑफ वन ऑफ द के बाद में नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर. ओके, सो द सेम थिंग. एक्चुअली अगर आप सेंस के अकॉर्डिंग जाएंगे तो एज पर सेंस नन के साथ सिंगुलर ही ना जाना चाहिए, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट नो वन. यस, होस्ट, होस्टिंग, करेक्ट. सो इट शुड बी सिंगुलर. मॉडर्न इंग्लिश में एज यू नो कि हम लोग प्लूरल वर्ब का भी यूज कर सकते हैं नन के साथ. सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर. और एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चंस जनरली नहीं देता है. तो अब ये जो क्वेश्चन, अब देखिए नो वन के साथ आप हमेशा सिंगुलर यूज करेंगे. नो वन कैन नेवर बी प्लूरल. यू कैन नेवर से नो वन वर प्रेजेंट. इट इज ऑलवेज नो वन वॉज प्रेजेंट. नो वन इज ऑलवेज सिंगुलर, बट द कंफ्यूजन आई एम टॉकिंग इज अबाउट नन, नॉट नो वन. इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? कंफ्यूजन नन में है, नो वन में कोई कंफ्यूजन नहीं है, वो हमेशा सिंगुलर होगा. राइट. नाउ व्हाट इज द टोन ऑफ टुडेज आर्टिकल? What is the tone of today's article? Quickly.
यस, करेक्ट, करेक्ट। सो देखिए, क्रिटिकल यू विल से टू, इट इज नॉट, ऑथर इज नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीथिंग। क्रिटिकल कहाँ दिखा आप लोगों को? वेयर डिड यू गेट क्रिटिकल? सो इट इज बेसिकली कंसर्न, analytical and concern, it is a tone of concern. So देखिए, इफ यू आर सेइंग कि अगर आपको ये लग रहा है कि यहाँ पर इन सारी चीजों को उन्होंने ये किया हुआ है, क्रिटिसाइज किया हुआ है, सो ही हैज डिस्कस्ड एवरीथिंग। जो फेट ऑफ फुटबॉल रहा है अभी तक ना, कि जो कहीं पर भी फेट ऑफ फुटबॉल रहा है, ही हैज डिस्कस्ड एवरीथिंग। सो इट इज बेसिकली एनालिटिकल, कि उन्होंने सारे प्रॉस एंड कॉन्स जो अभी तक फुटबॉल का फेट रहा है, उन्होंने सारी चीजों को बताया। उनका खुद का पर्सनल ओपिनियन कुछ नहीं था किसी भी चीज को क्रिटिसाइज करने का। सो वॉट एवर हैपेंड, क्या क्या चीजें हुई, कैसे वो हमारा होस्टिंग राइट हमारे हाथ से स्लिप आउट हो चुका था। So all these things we have discussed, and there is a bit concern also and hope also. Yes, hopeful also. Yes. If author is hopeful, then tone is optimistic. So yes, at a few stances there is hope also कि अब हमारी ये सारी चीजें क्या हो सकती है, बेटर हो सकती हैं, क्योंकि now we are back on the track, हम लोग वापस से ट्रैक पे आ सके हैं। So it will be optimistic, you can say, concern you can say, it will be analytical also, it can be analytical. Now it depends कि किस particular paragraph को रेफर किया जा रहा है, so उसके अकॉर्डिंग it can be the tone. Okay. नेक्स्ट टाइम से ना आई विल डिस्कस द टोन, एक सेपरेट नहीं रखूंगी मैं। टोन बेसिकली मैं पैसेज टू पैसेज ही डिस्कस कर दूंगी, सो दैट यू गेट द क्लैरिटी कि किस पर्टिकुलर पैराग्राफ में कहां तक क्या बातें हुई हैं, तो दैट विल बी बेटर। यस, एनालिटिकल, ऑप्टिमिस्टिक, एंड अ फ्यू केसेस अगर आप देखेंगे तो इट इज टोन ऑफ कंसर्न आल्सो। Usher in, yes, basically usher basically we call to not start something new. Usher in basically we call to help in something, assist in something. Okay, assist in something, but that is basically for good only. Okay. So these three are homework session, the homework questions for today. So ये तीनों homework question है. If you have time, if you get time, then do the homework. Okay. एडिटोरियल जरूर अटेंड करिए। होमवर्क अगर आपको टाइम नहीं भी मिल रहा है तो यू कैन स्किप दिस होमवर्क, बट डोंट स्किप एडिटोरियल सेशन, बिकॉज बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। वोकैब का आपको नहीं पता कि देखिए जीए के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कब पूछा जाएगा, यू नो कि 3 महीने आफ्टर 3 मंथ्स। वोकैब के जो यूसेजेस हैं, जो आपके ईडियम्स के यूसेजेस है, वो कब कहाँ क्या यूज हो जाए, यू नेवर नो। सो डोंट लीव वॉचिंग एडिटोरियल सेशन, प्लीज डू अटेंड एडिटोरियल सेशन। होमवर्क आपके ऊपर है, इफ यू कैन मैनेज देन डू, if you cannot manage you can leave it. Okay, so please like this session, share this session, subscribe to our YT channel. We'll meet at 9 a.m. today. Again we have some excellent questions. Okay, तो एक अच्छे सेशन के साथ फिर हम लोग 9 बजे मिलेंगे। Okay, thank you guys, I'm ending this session now.